Alright guys, so let's get started. आपके सामने एक टिपिकल पैनल की पिक्चर है जो कि जिसको हम जनरली कंट्रोल पैनल भी कह सकते हैं और ये इलेक्ट्रिकल पैनल भी है। जबकि कंट्रोल पैनल नहीं है, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर पीएलसी नहीं लगी हुई। तो जिसके अंदर पीएलसी नहीं लगी हुई वो टिपिकली ऑटोमेशन पैनल नहीं होता। सो दिस इज अ पावर पैनल जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि देयर आर सर्किट ब्रेकर्स, राइट। पावर पैनल जितने भी होते हैं जो हमारी रेजिडेंशियल जो ये बेसिकली दिस इज अ लो वोल्टेज पैनल बाय द वे। हमने मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज पैनल पहले पढ़ लिए थे, उसके ऊपर दोबारा हम बात नहीं करेंगे। देयर आर सर्किट ब्रेकर्स, रिलेस, कॉन्टैक्टर्स, टर्मिनल ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर, और टाइमर्स लगे होते हैं, सीटीज लगी होती है। किसी को पता है सीटीज क्या होती हैं? करंट ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं? दीज आर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। अब आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद वी हैव लाइक पावर एनालाइजर या एनर्जी मीटर्स, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, सर्किट ब्रेकर्स आप लोग देख चुके हो। रिलेज के ऊपर यस हम बात करेंगे। कॉन्टैक्टर्स और रिलेज में क्या फर्क है वो भी देखेंगे। टर्मिनल ब्लॉक्स क्या होते हैं वो देखेंगे। टाइमर्स क्या होते हैं थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे। सीटीज क्या होती हैं, सीटीज कहाँ यूज होती हैं। अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो आपका एनर्जी मीटर या एनर्जी एनालाइजर होता है ना, ठीक है, उस वो 3 फेजेस की एनर्जी को मेजर कर रहा होता है, राइट। अब एनर्जी मीटर या एनर्जी एनालाइजर्स आर नॉट कैपेबल टू मेजर हाई करंट्स। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे 500 एम्पेयर करंट आ रहा है, 600 एम्पेयर करंट आ रहा है, 1000 एम्पेयर का करंट है, तो वो करंट क्या है कि एनर्जी मीटर तो मेजर नहीं कर सकता। सो क्या करते हैं कि वी यूज अ सीटी, छोटा करंट ट्रांसफार्मर होता है जिसका रेशियो होता है लाइक 500/5 एम्पेयर। सो जब उसके ऊपर से 500 एम्पेयर गुजरते तो वो अपनी सेकेंडरी कॉइल पे 5 एम्पेयर देता है। तो एनर्जी मीटर को पता चल जाता है कि मैक्सिमम 500 एम्पेयर गुजर रहे होंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क, राइट। मैं आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो ऑफ अ टर्मिनल ब्लॉक। के टर्मिनल ब्लॉक क्या होते हैं, ये हमारी कंपनी फिनिक्स कॉन्टैक्ट के भी आते हैं। टेक अ लुक। टर्मिनल ब्लॉक क्या होते हैं बेसिकली कि इलेक्ट्रिकल पैनल में जितनी भी वायरिंग है ना उसको टर्मिनेट करने के लिए, कनेक्शंस बनाने के लिए या कनेक्शंस को टर्मिनेट किसी एक जगह करने के लिए वी यूज टर्मिनल ब्लॉक। इसका नाम ही बेसिकली टर्मिनल ब्लॉक इसलिए रखा है, इसको टर्मिनेट करने के लिए। एक एंड से वायर आएगी, दूसरे एंड से आउटपुट की वायर जाएगी और यहाँ पे ये टर्मिनल ब्लॉक लगा होगा। जस्ट टेक अ लुक, और ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। Terminal block is a component with an insulated frame that has the sole purpose of securing 2 or more wires together. Sir, recorded हो रहा? Want to connect wires? मुझे नहीं पता। Why not just solder them together, or twist them and wrap them with electrical tape? Using terminal blocks. ये देखो कह रहे हैं कि यार वायर्स को आपस में जोड़ने के लिए या तो पहले सोल्डरिंग करते थे या टेपों से लगा देते थे। This is a professional way. When using terminal blocks, wiring modifications are easy because wires can be removed or added quickly. Terminal block wiring is neat and orderly, allowing for quick identification, making modification and troubleshooting easier. We'll show you more good reasons to use terminal blocks later in this video. Terminal blocks are classified based on characteristics such as structure, device type, and termination options. Let's explore some of the classifications and characteristics of terminal blocks typically encountered in industry today. There are a variety of methods used to connect the wires inside the terminal block. Let's have a look at some of the more popular ones. Probably the most commonly used method for connection is the screw-in terminal block. Now there are different type of terminal blocks. ये वाला जो है ये screw type होता है. As the method for holding the wires. Be careful, over-tightening the screws can damage the wires and result in poor or potentially dangerous connections. The barrier terminal block is very similar to a screw-in terminal block as they use screws to clamp the wires. Depending on the application and environment, the barrier terminal strip may have a small lid to protect the wiring. Like the screw-in terminal block, it's important to strip the wire to the correct length, or the screw clamp might not make contact with the wire itself. अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये कनेक्टर स्ट्रिप कहलाती है, वायर कनेक्टर स्ट्रिप, ठीक है। इसको भी यूज कर सकते हैं बट इट डजंट हैव द राइट कनेक्शन।
आई मीन ये डिन रेल के ऊपर कनेक्ट नहीं हो पाती, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना जिसके डिन रेल कनेक्शन है, तो ये डिन रेल पे कनेक्ट नहीं हो पाती, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब हम आगे चलते हैं। नाउ यू सी ये टर्मिनल ब्लॉक्स हैं, ये देखो ये सारे के सारे पैनल पे सामने ये टर्मिनल ब्लॉक्स लगे हुए हैं। इसी तरह से टर्मिनल ब्लॉक्स इसके ऊपर यूज भी होते हैं और इसके ऊपर लगते भी हैं। अच्छा, अगला जो कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कहलाता है रिले, ठीक है। अब ये वीडियो जो है आई बिलीव के ओके, इस वीडियो को देखने से पहले आई वांट यू ऑल टू सी वन वीडियो। ये जो वीडियो है ना बेसिकली मैंने पावर सिस्टम की वीडियो दिखाई थी सब बच्चों को कि किस तरह से कनेक्ट होते हैं ट्रांसफार्मर से इनकमिंग एंड आउटगोइंग किस तरीके से जा रही होती है। ये वीडियो देखी आप लोगों ने? नहीं देखी वाली? ओके, नहीं देखी। इसको जरा देखो, ये इस वीडियो के अंदर पूरे का पूरा मीडियम वोल्टेज से लो वोल्टेज से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सारी की सारी चीजें, इसको जरा गौर से देखना आप लोगों ने। In this course, we will take you on a virtual tour to see how electrical power is distributed throughout a building. This is defined as the electrical distribution system. These systems are uniquely comprised of a variety of electrical components to meet specific electrical demands. You will learn the function of each of these electrical components and how it relates to the total operation of an electrical distribution system. In our example, we begin with the utility company supplying 13,800 volts from the road to a utility pole in the parking lot. At the top of this pole, you see 3 transformers. These transformers will step down 13,800 volts to 4,160 volts. This voltage is transferred down the pole through copper wires that are encased in conduit. This conduit travels underground and enters the oil transformer on the high or primary side of its junction box. Let's look at how the oil transformer works. The junction box receives the incoming power on the high or primary side. It enters the transformer through insulated copper connectors. Notice there are 3 wires. This is our 3-phase system. There are 3 windings, one for each of the wires or phases. The wires are connected to the top of the windings. The windings in this transformer will step down the voltage to 480 volts. Notice that the incoming wires that are carrying the 4,160 volts are smaller than the wires at the bottom carrying 480 volts. This is because the amperage increases when the voltage is lowered and vice versa. Higher amperage generates more heat and requires larger wires. Wires connecting to the bottom of each winding will then return to the low or secondary side of the junction box. From here, the wires will pass through conduit and travel underground to switchgear for further distribution. The oil in an oil transformer is used for cooling. The core is filled with non-conductive oil. In most cases, mineral oil is used. Traveling through fins cools this oil, which utilizes the conduction process. Usually there are no pumps in smaller oil transformers. In addition to fins, some larger oil transformers will have exterior fans with thermostats that blow additional cool air over the fins. Oil transformers are placed on a concrete pad and almost always located outside the facility. This is in part due to a high fire risk. What is switchgear? It's the beginning of the electrical distribution system inside the facility located in an electrical room. It is made up of several sections containing switches and or breakers. The first section receives the incoming power from the oil transformer. The wires are connected to a main breaker, or in this example, they are attached to fuses. The fuses are connected to bus bar. Bus bar is either made up of copper or aluminum. The voltage travels through the bus bar to each section of connected switchgear, energizing each section. Here in our example, we have switchgear that is rated at 2,000 amps. It consists of 5 sections connected together.
As you can see, section 1 contains the incoming voltage connected to the main fuses. These main fuses protect the downstream equipment within the switchgear from exceeding 2,000 amps. In the event that more than 2,000 amps are drawn, these fuses will open and disconnect voltage. Section 2 and 3 both contain a draw-out breaker. A draw-out breaker is a large disconnect switch that has a designated amp rating for a specific circuit. These breakers are large and heavy, which require them to be on casters which run on tracks. This allows easy removal for maintenance and repairs. You can see the draw-out breaker in section 2 is connected to the bus bar that is traveling up into bus duct. Section 3 of the switchgear contains the second draw-out breaker. You can see that the bus bar connecting to this breaker is not attached to anything. This is a spare breaker designed for future expansion of the facility. Section 4 contains 6 molded case circuit breakers. These breakers have a lower amp rating than draw-out breakers and are not as heavy. This allows them to be directly molded to the bus bar. Remember, all breakers have the same function. They are to disconnect voltage when amperage exceeds its maximum rating. The fifth and final section of this switchgear is empty with a solid or blank panel cover. This could be a spare section for future expansion. A blank front does not necessarily imply that the section is a spare. It is important to ask what is the function of this section and is there something in there that needs to be tested. Our draw-out breaker in section 2 is connected to bus duct. Bus duct is a rectangular or square metal enclosure containing bus bar. Its purpose is the same as electrical wire and conduit, but is able to handle larger amp ratings. Bus duct is made up of 10-foot sections. Plugs or connectors are spaced every 2 or 3 feet for the purpose of attaching fused disconnect safety switches, which can then supply voltage to designated areas. In our example facility, you see the bus duct rising vertically to the roof. It passes through an electrical room on each floor. These rooms generally house breaker panels, 1 or more transformers, and or disconnect switches. Power is then distributed throughout the floor. The bus duct reaches the roof to supply power to HVAC systems through a disconnect. A distribution switchboard, a distribution panel, and a branch circuit breaker panel all have the same functionality. They can contain many circuit breakers distributing voltage to all areas of the facility. What differentiates them from each other is their amperage rating. Distribution switchboard is an electrical panel with an amp rating between 1,201 and 1,999. A distribution panel is an amperage rating of 401 to 1,200. A branch circuit breaker panel has an amperage rating that is equal to or less than 400 amps. The dry transformer has the same function as an oil transformer. It steps down voltage. The difference is that the dry transformer uses air for cooling instead of oil. As the transformer heats the air inside, cool air is pulled in at the bottom. Heat rises through a natural convection process and exits from the top. Dry transformers generally are used to step down 600 volts or less. Please note that transformers can be used to step up voltage or maintain a certain voltage. In most cases, transformers are used to step down voltage. An automatic transfer switch monitors the incoming power from the utility. If there is an interruption, it will send a signal to start an emergency generator. Once the generator reaches a desired voltage level, the ATS will switch over to the emergency power. There is a slight interruption in power from the time the ATS switches over
to the generator from utility power. In facilities such as data centers and hospitals where uninterrupted power is very important, a battery bank is in place to provide power until the generator is able to supply the correct voltage. Once the power from the utility is restored, the automatic transfer switch will automatically switch back to normal power. This emergency power generally needs specific circuits. In some cases, it may supply the entire facility, but this is not the norm. In larger facilities with higher emergency demands, you may find several generators along with several automatic transfer switches. Auxiliary power is also stored in a battery bank. A battery bank is located in a designated room with battery racks that house batteries that are connected together. They are being charged 24 hours a day. These batteries are connected together to provide a specific voltage for a certain period of time. Almost every facility, there are electric motors. Motors are used in pumps, machinery, conveyors, elevators, and the list is endless. In order to distribute power to motors, the electrical distribution system has motor control centers, or MCCs. These MCCs are made up of a series of sections. Each section contains buckets. Each bucket is assigned to a specific motor. The MCC bucket contains many things to operate the motor. There can be computer logic boards, or PLCs, transformers, contactors, and other control devices to operate the motor. For the purpose of electrical distribution, we only need to focus on a few components that relate specifically to the electrical. Each bucket has a disconnect switch and a breaker. The breaker is designed to trip if the power exceeds the recommended setting. The disconnect switch is there to manually turn off the power to the motor. There is also a combination motor circuit. These consist of the same disconnect switch and breaker, but also has two other features. It has a start-stop switch to manually turn the motor on and off. It also has a hand-off auto switch. When this switch is in the auto mode, it allows another source to control the motor. A good example of this would be a sump pump. A float switch that is switched on by rising water will control the sump pump. The motor will be turned off when water levels go down and reset the float switch to the off position. When this switch is in the hand position, the motor is always on. Power distribution units, or PDUs, are found in data centers and computer rooms. Each of these units contains one or more circuit breaker panels and a transformer. ओके बच्चों, ये यहीं तक इसको समझना है, इससे ज्यादा इसकी डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेज की रिलेज क्या होती है। बच्चों एक बात याद रखना, मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो 12 बजे के बाद या मैक्सिमम 12:05 के बाद किसी को अलाउ नहीं करूंगा सेशन के अंदर आना। वी रियली हैव टू रिस्पेक्ट द टाइम, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी नहीं है हमारी जहाँ पे हम जिस मर्जी टाइम पे चले जाएं। दिस इज अ प्रोफेशनल क्लास, और अगर आप अपनी जिंदगी में प्रोफेशनलिज्म नहीं लेके आएंगे तो आपको आगे जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम होने जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम 12:05 तक मैं लोगों को इंटर करूंगा, उसके बाद मैं नहीं इंटर करूंगा। जैसे आज की क्लास के अंदर इफ यू कैन सी 100 से ऊपर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। दिस इज द मैक्सिमम व्हिच वी विल हैव, ठीक है। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अगला सेशन आखिरी सेशन होने जा रहा है, उसके अंदर मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है, तो प्लीज जरा इसको केयरफुली देखिएगा। और मैं अभी टीम्स भी बना दूंगा जो आखिरी प्रोजेक्ट है उसके लिए। बहुत सारे बच्चों ने मूवी वाला असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाया क्योंकि वो कह रहे थे कि जी उनके पेपर्स हो रहे हैं और बहुत सारे और मसले मसाइल थे उनके साथ। सो ये जो फाइनल प्रोजेक्ट है, अब इसमें चाहे पेपर हो रहे हैं या पेपर नहीं हो रहे, अगर आपने ये फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करा तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपके पेपर हो या ना हो या जो भी मसले मसाइल हो, इस प्रोजेक्ट पे तो काम करना पड़ेगा, वरना किसी एक चीज पे सेक्रीफाइस कर लो, या प्रोजेक्ट ना सबमिट करवाओ, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ना लो, या ये कर लो, ठीक है। इट्स अप टू यू गाइस, राइट। सो नाउ लेट्स सी आगे क्या है। नाउ वी हैव रिलेज। मैंने जैसे लास्ट सेशन में आपको बताया था कि ये रिलेज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होती हैं। जब हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी तो मैंने उसको भी आप लोगों को बताया था कि ये रिलेज इंडस्ट्री में सेल होती हैं। हर तरह की रिलेज है देयर आर। अगर आप देखें तो, अगर इस रिले को देखें तो दिस इज पिन रिले, बिकॉज इसके नीचे अगर आप देखें तो ये जो पिन है ये आपको फ्लैट नजर आती है।
इसी तरह हमारे पास राउंड पिन रिलेज भी होती हैं, इसके कॉइल वोल्टेजेस डिफरेंट होते हैं। ये नीचे जो कहलाती है दिस इज कॉल्ड रिले बेस, और ये स्लिम लाइन रिले, ये सब की सब इंडस्ट्री में यूज होती हैं। ठीक है, जब हम इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप की आगे जब प्रॉपर्ली इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन रिलेज को मार्केट कैसे किया जाता है, इंडस्ट्री में कौन सी रिले की रिक्वायरमेंट होती है, बायर क्या देख रहा होता है रिलेज के अंदर, और उसे कौन सी रिले चाहिए होती है, कौन कौन सी पोटेंशियल इंडस्ट्री है इन रिलेज की, ऊपर टर्मिनल ब्लॉक की, पावर सप्लाईज की, सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्दर इफ वी गो डाउन टू द डिटेल्स, ये देखो इस रिले को जरा एक नजर, इसके नीचे अगर तुम देखो तो ये बेसिकली द पिन्स आर राउंड, ये राउंड है पिन्स इसकी अगर आप देखें। ठीक है, सो ये राउंड पिन्स है, और ये इसके अगर बेस देखो तो ये बेस भी राउंड है। अगर तुम ये चीज देखो तो इस बेस के ऊपर जो है ये देखो ये गोल पिन्स बनी हुई है, इनका मैनर इस तरह से है कि इसके अंदर आके ऐसे लगेंगी। और अगर आप इसको देखें सो दिस इज अ फ्लैट पिन रिले। अच्छा, अब राउंड पिन और फ्लैट पिन में फर्क क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों दोनों को यूज किया जाता है। देखो ये फ्लैट पिन है और ये इसकी इस तरह की बेस है। आमतौर पे ये जो फ्लैट पिन रिले होती है ये सिग्नल्स देने के लिए यूज होती है। इसका मैक्सिमम करंट होता है 6 एम्पेयर, समटाइम 8 एम्पेयर। लेकिन जो राउंड पिन रिले होती है इसका करंट ज्यादा होता है, इसका ड्राइविंग करंट ज्यादा होता है, ये 10 एम्पेयर तक जाती है। तो जहाँ पे आपको किसी डिवाइस को ऑन करवाना है, उसको ज्यादा पावर चाहिए, तो वहां पे आप ये यूज करते हैं राउंड पिन, और जहां पे आपको सिर्फ सिग्नलिंग करवानी वहां पे आप फ्लैट पिन यूज करते हैं। ठीक है जी, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द कंट्रोल पैनल, मैं चाहता हूं कि आप जरा कॉन्टैक्टर्स और रिलेज का डिफरेंस समझ ले, क्योंकि जो आगे कंट्रोल पैनल हम देखने जा रहे हैं उसके अंदर रिलेज कॉन्टैक्टर्स दोनों चीजें होंगी, तो जरा इनका डिफरेंस देख लो। Turn things on and off, we need devices that are switchable by the application of a current or voltage. Electrically, we have transistors and integrated circuits. Mechanically, we have relays and contactors. The main difference between contactors and relays is the loads that they are meant to handle. Contactors are used for loads that have high voltage, high currents, or both. Contactors are used for devices that pass more than 15 AMPS or loads of more than 3 kilowatts. For lower amounts, ordinary relays are used. In this video, we will go to learn difference between contactors and relays. A contactor is an electrically controlled. अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूं कि सेशन के एंड में अटेंडेंस होगी। ठीक है, सो जाइएगा नहीं, अटेंडेंस होगी। मैं भी गूगल फॉर्म शेयर करने लगा हूँ आपसे, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं करूंगा, मैं यहीं पे करूंगा, यहीं चैट में करूंगा। आप सब अपनी अटेंडेंस लगवा दीजिएगा, और सिर्फ यही बच्चे होंगे जो नेक्स्ट सेशन में अलाउ किए जाएंगे, बाकी कोई बच्चा नहीं आएगा। सो इन सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों का एक ग्रुप बना दूंगा मैं, सिर्फ वही बच्चे प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकेंगे, बाकी कोई नहीं करवा सकेगा, बिकॉज किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं भी अभी जाना नहीं, जो बच्चे चले जाएंगे फिर मुझे नहीं कहना कि सर मुझे कोई मैसेज नहीं आया इस किस्म का कि जी वो हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, हम तो इंटरनेट नहीं चल रहा था। मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप ये देखें, मैं आपसे एंड ऑफ द सेशन आपसे गूगल फॉर्म शेयर कर लूंगा, और सिर्फ उन्हीं बच्चों का मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है जी, और सिर्फ वही बच्चे अलाउड होंगे और कोई बच्चा अलाउ नहीं होगा। ओके, सो आप ओके सर, देख सकते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर, and a few other differences. A contactor is controlled by a circuit which has a much lower power level than the switched circuit. Contactors come in many forms with varying capacities and features. Unlike a circuit breaker, a contactor is not intended to interrupt a short circuit current. Contactors range from those having a breaking current of. अच्छा, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता दूं कॉन्टैक्टर और रिलेज के बारे में। देखो, रिलेज आमतौर पे फेजेस के हिसाब से नहीं होती। रिले वन इनकमिंग होती है उसके अंदर, और मैक्सिमम 2 आउटगोइंग या 4 चेंज ओवर होती है। लेकिन जो कॉन्टैक्टर होता है ना, बेसिकली इसका करंट बहुत ज्यादा होता है। सो ये 3 फेजेस पे लगता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, समटाइम्स आई मीन न्यूट्रल पे भी लग जाता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या आउटपुट चाहिए, राइट। कॉन्टैक्टर का जो करंट होता है 25 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 45 एम्पेयर तक जाता है।
कॉन्टैक्टर इज अ हैवी करंट डिवाइस, ठीक है। तो जहां पे हमें हैवी मोटर्स को चलाना होता है वहां पे हम कॉन्टैक्टर्स यूज करते हैं, राइट। हैविंग सेड दैट, अब तुम जरा इसको दोबारा से शुरू से देखो वीडियो। रिलेज और कॉन्टैक्टर में डिफरेंस मैं तुम्हें समझा दिया, दोबारा देखो इसको क्योंकि आगे चल के बहुत यूज होने वाली चीज। Turn things on and off. We need devices that are switchable by the application of a current or voltage. Electrically, we have transistors and integrated circuits. Mechanically, we have relays and contactors. The main difference between contactors and relays is the loads that they are meant to handle. Contactors are used for loads that have high voltages, high currents or both. Contactors are used for devices that pass more than 15 amps or loads of more than 3 kilowatts. For lower amounts, ordinary relays are used. In this video, we will go to learn difference between contactors and relays. A contactor is an electrically controlled switch used for switching an electrical power system, similar to a relay except with higher current ratings and a few other differences. A contactor is controlled by a circuit which has a much lower power level than the switch circuit. Contactors come in many forms with varying capacities and features. Unlike a circuit breaker, a contactor is not intended to interrupt a short circuit current. Contactors range from those having a breaking current of several amperes to thousands of amperes and 24-volt DC to many kilovolts. The physical size of contactors ranges from a device small enough to pick up with one hand to large devices, approximately a meter on a side. Contactors are used to control electric motors, lighting, heating, capacitor banks, thermal evaporators, and other electrical loads. A relay is an electrically operated switch. Many relays use an electromagnet to mechanically operate a switch, but other operating principles are also used, such as solid-state relays. Relays are used where it is necessary to control a circuit by a separate low-power signal, or where several circuits must be controlled by one signal. The first relays were used in long-distance telegraph circuits as amplifiers. They repeated the signal coming in from one circuit and retransmitted it on another circuit. Relays were used extensively in telephone exchanges and early computers to perform logical operations. Dear sir, thanks for watching the video. For more updates, please subscribe to our channel, Learning Engineering. And to get notifications, please press the bell icon. Okay. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। ब्रेकर्स मैं तुम्हें दिखा चुका था कि ब्रेकर्स क्या होते हैं। मजीद अगर ब्रेकर्स डिटेल में देख चुके हैं ना आप लोग, या उसमें कुछ कंफ्यूजन है? If anyone have a confusion in breakers, हम हेलो जी सर, पिछले सेशन में डिटेल में कवर किए थे। सब एग्रीड हैं? ब्रेकर मजीद नहीं डिटेल में किसी को देखना तो हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। सो अब मैं तुम लोग को जा रहा हूँ टिपिकल कंट्रोल पैनल की तरफ। जरा इसको गौर से समझना कि ये कंट्रोल पैनल क्या होता है, बिकॉज आगे जितना भी हम IoT के पोर्शन पे जा रहे होंगे सारा का सारा कंट्रोल पैनल से ही मामला आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ये जो दिखाने जा रहा हूँ इसको जरा बहुत गौर से समझना, ठीक है। और इसके बाद हमने देखना है ऑटोमेशन पैरामीटर को, कि ऑटोमेशन पैरामीटर क्या होता है, PLCs क्या होती है। अच्छा, एक चीज रह गई है, ओवरलोड रिले, वो भी तुम लोगों को भी दिखानी, बल्कि मैं इससे पहले तुम्हें ओवरलोड रिले दिखा दूं, क्योंकि ये ओवरलोड रिले मोटर्स से पहले यूज होती है बच्चों। ओवरलोड रिले का काम क्या होता है कि ये बेसिकली इसके अंदर थर्मल ट्रिप होता है, और जब भी इसके अंदर से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट गुजरता है ये उसको मेजर करती है, और जब ज्यादा गुजरता है तो ये उस हिसाब से उसको ट्रिप करवा देती है। ओवरलोड रिले इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है, मोटर्स जहां जहां लगी है वहां पे आपको ये ओवरलोड रिलेज नजर आएंगी, ठीक है। सो नाउ टेक अ लुक कि ओवरलोड रिले है क्या, इसको समझना जरूरी है। ओवरलोड रिले के बाद हम अपने कंट्रोल पैनल पे आएंगे। What is an overload relay? An overload relay is a sensory device that protects a motor from continuous high current draw.
and will allow a non-dangerous temporary overload. अब अगर तुम ये देखो, ये इसके बेसिकली कनेक्शंस हैं। ये जो तुम्हें व्हील नजर आ रहा है बेसिकली इसकी करंट रेटिंग को सेट करता है कि कितने करंट पे जाके ये ट्रिप करवा दे। As high current flow condition during starting. However, it will turn off the motor if a current is high enough to cause motor damage over time. Am I going to buy another overload and replace it? No, the overload relay can be reset when conditions causing the overload event have been detected and resolved. Forgive me, why don't you just use a fuse? A fuse or circuit breaker protects a motor from a quick high current events related with short circuits. An overload relay is used to limit current for a predetermined period of time. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार समझना। ये देखो इन्होंने क्या किया है। सवाल ये है कि अगर आपने मोटर को ओवरलोड करंट से बचाना है या शॉर्ट सर्किट से बचाना है तो फ्यूजेस भी लगा सकते हैं, ब्रेकर भी लगा सकते हैं, ये रिले ही क्यों लगानी है? तो इसका जवाब ये है, देखो ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, या आपको जिंदगी में जब भी आपने चीजों को देखना है, ये सारी की सारी वो चीजें जो अब तक जब इंडस्ट्री में इंशाल्लाह जाओगे तुम्हें नजर आएंगी, ठीक है। फ्यूजेस इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर इन केस कोई शॉर्ट सर्किट आए तो फ्यूज ब्लो कर जाए, बट फ्यूज को आप वेरिएबल नहीं कंसिडर कर सकते, ये फ्यूज वेरी नहीं होता। तो ये जो ओवरलोड रिले है बेसिकली इसके अंदर आप इसको 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर जितने भी एम्पेयर आप पे जिसको ट्रिप करवाना है उस पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज व्हाई इट इज यूज्ड for a predetermined period of time. Too much current may damage a motor by gradually breaking down the winding insulation. Okay, but what's a motor overload conditions can happen? Actually, if the rotor is locked, the motor is undersized for a given load. If the motor is frequently started and stopped, or there is a loss of one of the phases in an industrial 3-phase AC system. Additional causes might be under or over voltage, damaged bearings, improperly aligned shafts, poor ventilation, high ambient temperature, or a combination of these factors. So the overload is important to run the motor properly. It can't run the motor alone. An overload relay paired with a contactor forms the two necessary components for a motor. ये बात समझ में आएगी ओवरलोड के साथ कॉन्टैक्टर क्यों लगाया जाता है? बिकॉज ओवरलोड रिले जो है बेसिकली कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करेगी और कॉन्टैक्टर के थ्रू आगे से करंट ड्राइव होगा, ठीक है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। और ये इसकी कॉम्बिनेशन मिलके बनाती है मोटर स्टार्टर, जिसे हम कहते हैं DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर, ठीक है। It is starting or stopping the motor. The overload is protecting the motor from continuous overload conditions. But how the overload will tell the conductor to make or break the connection? An overload relay also includes one or more auxiliary contacts used for feedback elements inside the control circuit, and they tell the conductor to break connection when the overload senses a continuous overload. The overload heater elements are placed in series with a contactor. Okay, बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें शुरू हो गई। मैं इन चीजों की डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें टेक्निकल हो जाए बंदा बोर होना शुरू हो जाता है। अब ये देखो अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कंट्रोल पैनल की, वो क्या है? इस वीडियो के बाद नाउ वी विल जंप इनटू द इंडस्ट्री 4.2 सेक्शन। ओके, इस आपने बहुत ज्यादा गौर से देखना है, ठीक है, एंड तक देखना है और बहुत ज्यादा गौर से देखना है क्योंकि इसके दिस इज द क्रक्स ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड। इसमें बहुत सारी चीजों की जो तुम्हें नहीं समझ में आएंगी वो लिख के रखना, मेरे से पूछना। ये लो, नाउ टेक अ लुक। Ever wondered how an automobile assembly line is controlled? In this video, we're going to talk about what controls large or small mechanical processes like an assembly line. That device is called a control panel.
we get started on today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below. Then make sure to click subscribe and the little bell to receive notifications of new RealParse videos. This way, you never miss another one. Think of a control panel like the human body. Inside our bodies, we have vital organs that control and monitor our surroundings. Similarly, a control panel is a metal box which contains important electrical devices that control and monitor a mechanical process electrically. Let's get started. First, let's talk about the enclosure, the metal box that contains all of the electrical devices of the control panel. Enclosures are often aluminum or stainless steel, and the size will vary based on the size of the process. A control panel enclosure can have multiple sections. Each section will have an access door. The size of the enclosure is commonly referred to by the number of doors the enclosure has. Each enclosure will have an electrical safety rating designated by UL, the Underwriters Laboratories, who governs electrical safety. They will also have an IP rating, or NEMA classification, which designates the enclosure to be indoor or outdoor, waterproof or water-resistant, suitable for hazardous conditions, dust-proof, or explosion-proof. Now, let's go inside the enclosure and talk about the non-electrical components that make up the control panel. First, let's talk about the back panel of the enclosure. The back panel is a sheet of metal that is mounted on the inside of the enclosure that allows us to drill mounting holes for different devices, which leads us to our next component, DIN rails. A DIN rail is a metal rail with a standard width used for mounting electrical devices inside. The next component inside the control panel is wiring duct. Ducts allow us to route the wires in an organized and efficient way, while also reducing electrical noise between devices. Next, let's get into the electrical components of the control panel. The main circuit breaker is where the power comes into the control panel for all of the devices. The circuit breaker generally has a disconnect on the outside of the panel that allows us to shut off the power. Always remember the top side of the circuit breaker will still have power. The power that comes into the panel can be anywhere from 480 volts to as low as 120 volts. After the power comes into the panel from the main circuit breaker, the power will be run into a surge arrestor. A surge arrestor is a device that protects all of the electrical equipment inside the control panel from electrical surges or overvoltage. An electrical surge can come from a lightning strike or utility power surge. The power can be connected into a transformer that switches the power down in order to power smaller devices. If the incoming power is above 120 volts, a transformer is generally used. If the power is 120 volts, a power supply can be used to step the power down to 24 volts. Now that the control panel has incoming power from the main circuit breaker, power distributed by a transformer or power supply, the different voltages can be wired into terminal blocks for even more routing of power throughout the control panel. A terminal block consists of two terminals that can join two or more wires together. Terminal blocks can be arranged with several other blocks in a strip mounted on a DIN rail to run power from one source to several devices throughout the panel. The final part of the control panel are the devices that control and monitor the mechanical process. Let's talk about the PLC, or Programmable Logic Controller. The PLC is like the brain of the entire process. The PLC will have a CPU where the logic program is stored. It will have associated inputs and outputs, which will help control and monitor the assembly line. Speaking of our terminal blocks, we will have wires running from them to our inputs and outputs. This allows for the actual control of the assembly line. Field devices, such as proximity switches, photo eyes, and other sensors,
are set up on the assembly line to give the feedback needed for the PLC to control the operation of the line. The PLC outputs will be wired to a bank of relays that will close an internal contact that will send power out to turn on or off a device on the assembly line. Smaller relays will control devices such as lights or fans, while a bigger relay, called a contactor, is used to control motors. We will also have a network switch located somewhere near the PLC. This will be powered with 24 volts, and it will be the hub for our communication to and from the PLC to network-compatible devices on the assembly line. One of those devices is our human-machine interface, or HMI. An HMI can be mounted locally onto a panel door or in a remote panel located closer to the machinery. The HMI can be a very dynamic tool in assisting the operator in controlling and monitoring the machinery. The PLC will pass signals over the network to the HMI for monitoring, and the HMI can send signals to the PLC for controlling the machinery. Today, we talked about the components of a control panel. Each control panel will have the main power source coming in that is distributed throughout the panel to varying devices for control and monitoring. Control panels will come in different sizes, but they all have similar devices that we talked about today. Want to learn PLC programming in an easy-to-understand format and take your career to the next level? Head on over to realcars.com. हाँ जी, समझ में आया? कुछ नहीं आया? जी Okay. सर, समझ आया। Good. Yes, sir. Now what we will do Yes, is sir. we will move towards Industry 4.0. ठीक है? अब ये जो भी तुम्हारा ऑटोमेशन का कंट्रोल पैनल है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे, हम ऑटोमेशन पैरामीटर को डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेशन पैरामीटर है क्या, ऑटोमेशन है क्या, ऑटोमेशन पैरामीटर है क्या। और देखो, इंडस्ट्री 4.0 को इन डेप्थ समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीएलसीज को भी देखना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट पीएलसी, विदाउट ऑटोमेशन हम चीजों को क्लाउड पे नहीं लेके जा सकते। इंडस्ट्री 4.0 है क्या, वो इतनी आसानी से तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें 2-3 तरह की डिफरेंट वीडियोस दिखाऊंगा। उसके बाद जो अगला हमारा सेशन होगा उसके ऊपर हम थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। लेकिन 2-3 तरह की वीडियोस देखो और अपना माइंडसेट थोड़ा सा डेवलप करो, इंडस्ट्री 4.0 है क्या। लेकिन मैं उससे पहले तुम्हें ये बताता चलूं कि जहां डेटा सारे का सारा किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यूनिफाई हो के किसी एक क्लाउड के ऊपर जाएगा और क्लाउड से बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट्स उस सर्टेन डेटा को एक्सेस करेंगे जो कि अवेलेबल हो जाएगा, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कहलाएगा इंडस्ट्री 4.0। अच्छा, इंडस्ट्री 3.0 क्या है, इंडस्ट्री 1.0 क्या है, इसको भी हमने डिस्कस करना है। ये भी हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि ये रेवोल्यूशन आई किस तरह से, इंडस्ट्री 1.0 में क्या था, 2.0 में क्या था, 3.0 में क्या था, फिर 4.0 में क्या हुआ। ठीक है, इसको भी डिस्कस करना है। और इससे रिलेटेड मेरे पास एक बहुत अच्छी तुम लोगों के लिए एक वीडियो भी थी जिसके अंदर ये सब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये हुआ कैसे। और मैं तुम्हें फिनिक्स कॉन्ट्रैक्ट ब्रिंग्स ऑगमेंटेड रियलिटी इनटू, बाय द वे आई वांट टू शो यू समथिंग, लेकिन ये थोड़ी सी हायर लेवल की चीज है। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। पहले चलो तुम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, ये हो क्या रहा है, फिर हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर। यस सर। यस सर। ओके,
What does it mean for you? What is Industry 4.0? What does it mean for you? Technology is driving change across all areas of society. Not only do we increasingly use it and even rely on it in our personal lives, we also find our workplaces digitally evolving with more and more processes now being undertaken using technology. This change is known as the Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0. Industry 4.0 will see many tasks that were once performed by us now being automated. With the collection and analysis of real-time data, artificial intelligence, and the ability for all components of a production line to talk to each other, production can be really efficient and personalized according to customer needs. What does this mean for us? With increased automation, our time will be freed up for concentrating on more complex tasks. We will need a workforce who are capable of building, programming, and developing these technologies, but also making sure we are applying them to our lives in an ethical way. There are core skills that we can offer that technology cannot replace. The human touch is going to be incredibly important to these technologies, but also ये जरा बात समझने की जरूरत है, देखो जरा गौर से. making sure we are applying them to our lives in an ethical way. There are core skills that we can offer that technology cannot replace. The human touch is going to be incredibly important to ensuring effective communication, problem solving, and supporting change management in this digital environment. There will also be a greater need for joint working across disciplines, creating new innovations. The future job market will be looking for graduates with an open mind to explore the unknown future possibilities. We will all need to develop our skills in order to embrace and adapt to this ever-changing environment. What will you do to make sure you are ready and have the right skills to thrive in the Fourth Industrial Revolution? हाँ जी, समझ में आया नहीं आया? सर सर आया. ओके गुड. क्या समझ में इसमें नहीं आया तुम लोगों को? सब समझ में आ गया? यस सर. पक्की बात है? सब समझ में आ गया तुम लोगों को? कुछ भी पूछना नहीं? ओके. अगर तुम लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, सो द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डू इज इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर. ये एक बेसिक लेवल की वीडियो जिसमें उसने बताया कि हमें इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है और हमें क्या क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को किन चीज़ों में देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो यहाँ तक तो बात बहुत आसान है, समझ में आ जाती है. इससे थोड़ा सा जब ऊपर हम जाते हैं, सो आई वॉन्ट यू टू टेक अ लुक हियर. क्योंकि अगले वीक से हम फिर इसको जरा थॉरली डिस्कस करेंगे कि ये चीजें किस तरह से हो रही है, डिजिटल ट्विन क्या होता है, कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे. The fourth industrial revolution has begun, and you have the chance to be part of it. This isn't going to be like before. It's not about the steam that powered our factories in the first revolution, or the mass production model that dominated the second, or even the emergence of computer-driven systems from the third revolution that we're living in today. Industry 4.0 is about connectivity, an opportunity to radically... रुको, इसको तुम्हें दोबारा दिखाते हैं. इससे पहले एक छोटा सा काम ये सारे करो, ये अपनी अटेंडेंस लगा लो, और ये फॉर्म इधर उधर शेयर मत करना. ये लिंक मैं इधर चैट में दे रहा हूँ, ये मैंने दे दिया है. फटाफट इसको यूज करो, अटेंडेंस लगा लो. ये चैट में सबको नजर आ रहा है. इस वक्त 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों की अटेंडेंस लग सकती है, 101 भी नहीं होगी. ठीक है, तो फटाफट लगा लो, और जब सबकी हो जाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें फर्दर वीडियो आगे दिखा दूंगा.
Hajra has said that it's done. ओके सो मेरे पास रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए, लाइक 8 बच्चों ने लगा ली, 10 बच्चों ने लगा ली, ओके 14 रिस्पॉन्सेज, 20, इट्स इंक्रीजिंग। अब होगा क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी बच्चे हैं ना जो आज प्रेजेंट थे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये बच्चे इस इंटर्नशिप को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ इन्हीं को प्रोजेक्ट दिया जाएगा और इन्हीं से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी किया जाएगा। बाकी जितने भी बच्चे उनसे ना उनको प्रोजेक्ट असाइन होगा ना उनसे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, बिकॉज मुझे पता था कि 100 बच्चे ही हैं ग्रुप में जो कि एक्टिव होते हैं, बाकी 150, 170, 180 बच्चे आते ही नहीं है। अब देखना अगले वीक हर कोई क्या कह रहा होगा, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। ये सब बच्चे ट्रैवल कर रहे होंगे और बाकी जो 100 बच्चे ये सेशन अटेंड करने आए। सो अब देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये 100 बच्चे होंगे। आप लोगों का एक अभी चल के मैं आगे अभी एक ग्रुप बना दूंगा, आप लोगों को टीम लीड असाइन हो जाएंगे और ये टीम टास्क होगा, और आप लोग जब अपना टास्क परफॉर्म कर लेंगे तो अपनी टीम लीड को सबमिट करवाएंगे, आपका टीम लीड जिमको वालों को सबमिट कराएगा और द टीम लीड विल आस्क फॉर योर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स। वन मोर थिंग, while posting the internship certificates on the LinkedIn, आपने अपने प्रोजेक्ट की पिक्चर लगानी है और साथ अपनी पिक्चर लगानी है। और ठीक है, चाहो तो सर्टिफिकेट जो तुम लोग लगाते हो वो जरूर लगाना, बट प्लीज बच्चों मुझे मत टैग करना, क्योंकि जब तुम लोग मुझे टैग करते हो तो फिर मुझे इतने लोगों की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, इंटर्नशिप दे दे, इंटर्नशिप दे दे। तो जिमको को जरूर टैग करना, प्लीज बच्चों मुझे ना टैग करना। थैंक यू वेरी मच। ओके सो 79 रिस्पॉन्सेज, 81 रिस्पॉन्स। बच्चों जल्दी जल्दी करो, अटेंडेंस लगाओ, आगे खत्म करने हैं सेशन को। क्योंकि जैसे ही ये 100 पे जाएगा मैं एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज बंद कर दूंगा। So I have like 92 responses yet. कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है? क्योंकि अब के बाद मैं ये 101 बच्चे हैं यहाँ पे। नहीं सर, मैंने नहीं लगाई। बेटा जल्दी से लगाओ, जल्दी करो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, ये जो मूवी रिव्यू वाला टास्क है, हमारा प्रोजेक्ट है, और जो कंपनीज की हमें लिस्ट बनानी थी, ये तीनों प्रोजेक्ट हमें एक साथ ही सबमिट कराने हैं और एक ही जगह कराने हैं? हाँ, अपने टीम लीड को करवा देना, ठीक है। सर शो नहीं हो रही अटेंडेंस लिंक। अटेंडेंस नहीं शो हो रही, क्या मतलब? सर चैट में आपने भेजी थी ना, तो शायद वो वहां से मतलब रिमूव हो गई है। अरे भाई दोबारा कामरान खान ने भेज दी है, ये लो मैंने भी भेज दी है। मेरे पास 94 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, देयर आर 6 मोर टू गो, और उसके बाद मैं एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज का टैब क्लिक कर दूंगा और बंद कर दूंगा। जल्दी से कर लो जिसने नहीं लगाई है, क्योंकि मैं इसके बाद ये बात नहीं किसी की भी सुनूंगा कि सर वो मेरा नेट नहीं चल रहा था तो मैं अटेंडेंस नहीं लगा सका। कंट्रोल के लिए और बहुत सारा प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट बहुत सारा लगता है। जो पीएलसी है वो डायरेक्टली समटाइम सेंसर से डेटा नहीं लेती, तो ट्रांसड्यूसर्स भी लगते हैं। बहुत सारी चीजें और भी होती है। तुम जब पीएलसी पैनल को स्टडी करोगे या कभी बना रहे होगे तो तुम्हें आइडिया होगा। ये चीजें सारी बिल्कुल बेसिक्स है, तुम्हें बेसिक चीजें पता होंगी ना, तो बाकी तुम आगे की चीजें बहुत आराम से कर पाओगे। तो गाइस आई हैव लाइक 98 रिस्पॉन्सेस मेरे ख्याल में। जी I also have a question कि इसमें जो है ना, उन्होंने ट्रांसफार्मर सप्लाई 2 अलग-अलग बातें की थी वीडियो में, तो उसको प्लीज एलेबरेट कर दिए कि वो अलग उस टाइम डिस्टॉर्शन हो गई थी, तो मुझे समझ नहीं आया था कि वो
क्यों उन्होंने दो अलग-अलग चीज़ें यूज़ की हैं? सप्लाई अलग से क्यों है और ट्रांसफार्मर अलग से क्यों है? हाँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सप्लाई अलग क्यों और ट्रांसफार्मर अलग क्यों है? होता ये है, सम टाइम आपके पैनल के अंदर बहुत सारा इक्विपमेंट ऐसा लगा होता है जो 220 वोल्ट एसी पे नहीं चल रहा होता, 110 वोल्ट एसी पे चल रहा होता है। तो उसको वहां तक 110 वोल्ट एसी पे लाने के लिए आपको यू नीड अ ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो इस वजह से वो लगाया है वहां पे उन्होंने ट्रांसफार्मर, और नॉर्मल सप्लाई के थ्रू वो चीजें कर लेंगे, ठीक है जी। बच्चों, थैंक यू वेरी मच रिस्पॉन्सेज के लिए। मैंने रिस्पॉन्स, मेरे पास 100 रिस्पॉन्सेज आ गए और मैंने फॉर्म क्लोज कर दिया है। और जवेरिया का कुछ मसला है, शी इज इन मीट बट अनएबल टू फिल द, अच्छा ठीक है, जवेरिया को हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। सो ओके फाइन। सो नाउ अब तुम ये वाली वीडियो देखो और इसके बाद हम अपने सेशन को खत्म करेंगे। और अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो ग्रुप पे वो अपना वॉइस नोट भेज दे, मैं उसको जवाब दे दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो देखो और इसके बाद नेक्स्ट वीक हम एक अपना प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि मैं तुम्हें एक वीडियो सेशन भेजूंगा कि किस तरह से हमने प्रोजेक्ट करना है और तुम्हें डाउनलोड कहाँ से करनी है चीजें, ये सारी चीजें तुम्हें मैं एक वीडियो भेज दूंगा और टीम लीड अपनी टीम के थ्रू वो एग्जीक्यूट करवा लेंगे। वो 1 घंटे की वीडियो, उसको देख लेना कि प्रोजेक्ट करना कैसे है। मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे लिए पहले से किया होगा तो जरा फायदा हो जाएगा। और अगला वीक क्योंकि लास्ट सेशन है, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सर मिश्राज, तुम मिश्राज हो? अच्छा फौजा सर, नहीं सर, सर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे सर। व्हाट्सएप कर देना मुझे ग्रुप पे, अभी इसको जरा चलने दो। ठीक है सर। प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? It's not about the steam powered our factories in the first revolution, or the mass production model that dominated the second, or even the emergence of computer-driven systems from the third revolution that we're living in today. Industry 4.0 is about connectivity. It's an opportunity to radically change the way industry responds to the needs of society. As previous industrial revolutions were led by innovations in manufacturing processes and systems, the advancement of Industry 4.0 will be driven by a smart, interconnected, pervasive environment. The opportunities for disruption are huge, and those left behind will feel it acutely. There is still space for leaders of this new revolution to emerge, but the race has already started. Understanding what current leaders are doing will help you join them. KPMG formally examined what those trailblazers were doing in their factories and their offices, and it revealed some thought-provoking findings. Our research highlighted a number of areas that current Industry 4.0 leaders are focusing on. Leaders are planning ahead with clear strategic vision, driven by performance and tying investment to proven opportunities for growth, progress, and innovation. They are focused on discovering how smart products and processes can be developed. Integration is key. The major players are moving away from isolated silo-driven development, which limits scope and value of new projects. Instead, they are moving towards large-scale and proactive integration across their enterprise and among their customers, supply base, and products. To ensure they are aware of every possible opportunity Industry 4.0 technology has to offer. And perhaps most importantly, they are not afraid to think big and act bold. This means nurturing innovation, developing disruptive thought processes aimed at devastating the status quo, and looking for opportunity in every element of their value chain, from which products are designed and how they are produced, to who they are sold to and how they are purchased. Your organization may be radically different in the future, with a range of products, services, and processes you can't currently predict. Do you want to join the leaders of Industry 4.0? Can you afford not to? Then our advice is plan ahead, fight radical change with integrated radical action, and embrace the fact that it's time for manufacturers to step up
and start making smart, bold moves. If you don't, you could be left behind. You have this chance. Let us help you take it. ओके बच्चों, आई बिलीव आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्री 4.2 क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं विद फाइनल सेशन इन विच विल हैव अ प्रोजेक्ट। वाहिद दिनों यहाँ मौजूद है, ये तुम्हें हेल्प कर देगा सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर पे काम कर चुका है। अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए हो तो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड वाहिद से हेल्प ले ले। सॉरी सर, कौन सा सॉफ्टवेयर नेम? बेटा मैं अभी एक वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा, वो वाहिद आपको लिंक भेज देगा और वाहिद सब बच्चों को गाइड भी कर देगा। वाहिद एक काम करना, जो है ना इस ग्रुप से अच्छे बच्चे निकालो, उनको गाइड करो और तुम सारे मिलके एक दूसरे की हेल्प करो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए। नेक्स्ट वीक आप सबके पास वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए और उस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम थोड़ा सा काम करेंगे और आपको मैं बहुत आसान प्रोजेक्ट है, 5 से 10 मिनट में प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पिछले बैच पे हो सकता है। सॉरी प्रोटियस या It's a software from Phoenix Contact, professional software है, it's a software from Phoenix Contact। ठीक है, ये बहुत आसान है, 5 से 10 मिनट में प्रोजेक्ट पूरा बन जाएगा। ठीक है, और 1 वीक का टाइम होगा बच्चों के पास, 1 वीक के अंदर ये प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। 1 वीक से ऊपर जिसने किया उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, और कह रहा है एक ही मतलब अगले हफ्ते से अगले हफ्ते जमा कराना है। हाँ हाँ भाई बच्चों, 5 मिनट का प्रोजेक्ट नहीं है, 5 मिनट का भी नहीं है। ठीक है, तुम उसी दिन सबमिट करा सकते हो, इतना आसान है। ठीक है, मैं एक दफा तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम लोग हंसोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, ये कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन बच्चों से वो भी नहीं होता। आप सबने अपने अपने प्रोजेक्ट की पिक्चर लगानी है जब आपने अपलोड करना है लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, और अपनी एक अच्छी पिक्चर लगानी है वो करते वक्त, सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त। चाहो तो सर्टिफिकेट की पिक्चर लगा देना। आई वांट कि यार पूरी लिंक्डइन कम्युनिटी को पता चले कि तुम लोगों ने एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है, तुम्हें पता है कि डिजाइनिंग किस तरह से आती है। ये बड़ी अच्छी चीज है। जब भी तुम किसी इंडस्ट्री में जाओगे तुम बताओगे कि सर मैंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम किया जिसके अंदर रिलेज भी मैंने देखी, पावर सप्लाईज भी देखी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखी, तो तुम्हारा एक्सपोजर बेहतर होगा। राइट, सो हैविंग सेड दैट बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो ग्रुप पे वॉइस नोट डाल दे। राइट, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।